Hey guys, welcome to the first video of week 1, the lesson 1. It's about positioning your consulting business. आपने अपने consulting business को किस तरह से position करना है so that it's profitable, so that you attract more clients and your business does really well. So पहले बात करते हैं कि what kind of consulting business you do not want to be. आपने कैसा business मैं नहीं चाहता आप बनो, आपका कंसल्टिंग बिजनेस ऐसा हो या फिर आप कंसल्टेंट हो. आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन दिस सिचुएशन. यू डोंट वॉन्ट टू बी अ कंसल्टिंग कंपनी दैट वर्क्स फॉर पेनीज. जो कंपनीज कंसल्टेंट्स बहुत सस्ते में काम करते हैं, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी देम. आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अ कंसल्टिंग कंपनी दैट डिपेंड्स on platforms such as Upwork, where you compete with educated laborers who work at as low as $3 per hour. अगर आपने Upwork पे काम किया तो you know that there are people in Philippines, Bangladesh, that you would hate yourself to compete with such people because वो बहुत different level पे operate करते हैं and उससे compete करना इतने low hourly rate पे या फिर clients की expectations होती हैं Upwork पे वो बहुत different होती है. They come to you just to get cheap work done. And इस वजह से Upwork पे I don't want you to depend on Upwork. There are ways you can get profitable and higher ticket jobs at Upwork, लेकिन इस पे dependency नहीं होनी चाहिए आपकी that you are chasing clients on Upwork. That's a terrible business to be in. You have to work with worse paying clients who don't treat you well. That's a big pain I don't want you to go through. मैं चाहता हूँ अच्छे क्लाइंट के साथ काम करो जो आपको वैल्यू करें, आपकी सर्विसेज को आपको टाइम पे करें एंड आपको रिस्पेक्टफुली आपके साथ काम करें. सो आई डोंट वांट यू टू बी वर्किंग विद बैड क्लाइंट्स एंड आई डोंट वांट यू बी इन सिचुएशन दैट इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 3-4 years your portfolio is all over the place. I have seen my friends who are into the same industry. If I look at their site, I ask them कि आप लोग आपने क्या काम किया है. So they'll show me some WordPress sites, they'll show me some Magento store they did, and they'll show me few SEO campaigns they ran. लेकिन उसमें से कुछ भी impressive नहीं होता, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि वो अपने clients को show करके दिखा के उनको impress कर सके. I call it that they have a portfolio that goes really long. They say that I've worked with dozens and dozens of sites and dozens of marketing campaigns. लेकिन वो यूज़फुल नहीं होता अगर वो किसी क्लाइंट को दिखाते हैं. नॉट इम्प्रेसिव. सो आई वॉन्ट यू टू हैव एक्चुअल केस स्टडीज़, एक्चुअल सक्सेस स्टोरीज जिनको आप अपने क्लाइंट्स को जब दिखाओ तो दे फील इम्प्रेस्ड एंड आपको यू टेक प्राइड इन योर पोर्टफोलियो. सो आई वॉन्ट यू टू बी अ बिजनेस दैट changes, that brings positive changes to your clients' businesses and you give them real ROI. And I don't want you to be in a business that you have no real success stories and case studies to share, like I said. And there's countless such consultants and IT and digital marketing companies out there जो कि इस position में हैं, who are in the exact same position जिस पे कि they have lot of people in the company who are working at low salaries. They are churning out generic work, working with bad clients. Somehow companies survive करती हैं, but the kind of life you give yourself by working for such companies or by running such a companies is not that great. आपको ज़्यादा value नहीं मिलती and the quality of life really suffers if you are in that position. And thank God that there is an antidote for it. अगर आप ऐसी business start नहीं करना चाहते, if you don't want to be in such a situation, there is an antidote for you. You can avoid being in that position by positioning your consulting business. ये वो step है जो ज़्यादातर companies, not ज़्यादातर but काफ़ी companies skip कर देती हैं. उनको नहीं पता होता कि उनको अपने business को position करना चाहिए for the long term betterment of the business, and जिसकी वजह से वो बड़ी mediocrity में रहती हैं and they keep struggling and they don't even know that why they're struggling. So before we as a first step, I want you to first position your consulting business, and that's what we'll do in the week 1. This week we'll position your consulting business by picking up your niche.
आपकी हम नीश सेलेक्ट करेंगे. सेकेंडली विल नो अबाउट योर बर्निंग प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ योर नीश. आप जो टारगेट नीश जिसको आप टारगेट करने वाले उनकी प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड डिज़ायर्स क्या होती हैं वो जानेंगे. नो द सर्विसेज दैट यू वांट टू सेल टू सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ योर नीश. We'll document the target audience in the form of customer personas. सारे डॉक्यूमेंट करेंगे आपका टारगेट क्लाइंट कौन है, एंड विल स्टार्ट बिल्डिंग योर लिस्ट ऑफ आइडियल क्लाइंट्स एंड विल फाइंड अ कंपेलिंग ऑफर फॉर योर सर्विस. अगर आपको इफ़ दीज स्टेप्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू यू, डोंट वरी. मैं इन स्टेप्स को बारी बारी आपको एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल सो दैट यू नो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, एंड इसका क्या फ़ायदा होगा, एंड ये आपके बिजनेस पे कैसे अप्लाई होगा. सो आई विल टेल यू एवरीथिंग. डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू पिक योर नीश. अगर आपने मेरा जो फ्री वर्कशॉप था, आपने अगर यू अटेंडेड दैट 1 hour वीडियो दैट आई पुट टुगेदर, आई थिंक यू already know by now what niche is, but just in case if you haven't, so let me tell you what market niche is. This is the explanation of how Wikipedia explains the niche. A niche is the subset of a market on which a specific product is focused. The market niche defines as the product features aimed at satisfying specific market needs, as well as the price range, production quality, and the demographics that the niche is intended to impact. तो बेसिकली डेफिनेशन है नीश की फॉर द प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट. हम यहाँ पे हम बात करें, हमें नीश डिफाइन करनी है अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए. तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ. नीश इज़ अ सबसेट ऑफ इंडस्ट्री. जैसे फैशन एक इंडस्ट्री है, एंड फैशन ई कमर्स, फैशन बुटीक्स, एक अपैरल बुटीक्स एक नीश हो गई जिसको हम टारगेट करेंगे. लाइकवाइज हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री हो गई. उसमें अगर हम बात करते हैं डेंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, प्लास्टिक सर्जन्स की, वो एक नीश हो गई. इसके अपने फ़ायदे होते हैं. दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन आई मेड व्हेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस ऑफ सेलेक्टिंग वन नीश इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ई कमर्स कंसल्टिंग सर्विसेज टू ऑल द इंडस्ट्रीज. आई सेलेक्टेड कि मैं सिर्फ ऑनलाइन फैशन रिटेलर्स को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करूँगा, सो दैट आई कैन मास्टर वन नीश एंड रियली ग्रो. सो ये एक डिसीजन है जिसके मेरे बिजनेस पे बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है, एंड आई विल टेल यू व्हाई यू शुड डू इट एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस. सो लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर टू अंडरस्टैंड नीश. मेरा फेवरेट एग्जाम्पल होता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूरोसर्जन एंड जनरल फिजिशियन. एक जो जनरल फिजिशियन होता है, जैसे कि आपको कभी पेट में दर्द हो जाता है, आपको बुखार हो जाता है, आप क्या करते हो, आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, आप उनसे कहते हो डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है. तो फर्स्ट थिंग दे डू इज़ दे आपके मुंह में थर्मामीटर लगा देंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे, लंबी सांस लो, एंड द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. वो आपको जो उनकी गिनी चुनी सी दवाइयाँ होती हैं, बिकॉज उनके पास जो लोग आते हैं वो अगर पेट दर्द लेके आते हैं, स्टमक इन्फेक्शन होता है, तो बहुत उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं. जो अच्छे जनरल फिजिशियंस होते हैं, माई जनरल फिजिशियन ही वर्क्स ऑल डे, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, एंड दे डू वेल फाइनेंशली, बट उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती. एटलीस्ट माई जनरल फिजिशियन ही सीज लॉट ऑफ पेशेंट्स, बट आई सी हिम वर्क रियली हार्ड. इफ़ यू कंपेयर दैट टू जैसे कि जनरल फिजिशियन की जो स्किल सेट्स होते हैं बहुत जेनेरिक होते हैं. वो सब चीज़ों अगर उनके आपके पेट में भी दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, आपका जी मिचला रहा है, कुछ भी आप उसके पास जा सकते हो. बट अगेंस्ट दैट इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूरोसर्जन, तो ये हेल्थ केयर में ये भी डॉक्टर हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक स्किल सेट है इनके पास. ये आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो उसमें स्पेशलाइज करते हैं, एंड जो इनका जो काम होता है वो सर्जरी का होता है कि ये आपकी जो इनके पास बहुत स्पेसिफिक केसेस आते हैं, तो इनकी स्पेशलाइजेशन होती है न्यूरो सर्जरी में. इनकी जो इनकम होती है, दे वर्क विद बिगर हॉस्पिटल्स, एंड ये कम काम करते हैं, लेकिन इनकी जो इनकम होती है ये एक्सपोनेंशियली मोर होती है.
एक जनरल फिजिशियन से काम दोनों करते हैं, लेकिन जो ROI है वो एक न्यूरोसर्जन की ज़्यादा होती है, बिकॉज ही स्पेशलाइजेस इन वन स्किल एंड he provides his service to a specific target market. So हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू हेल्प यू बिकम अ न्यूरोसर्जन एंड नॉट अ जनरल फिजिशियन, ताकि आप न्यूरोसर्जन की तरह कम काम करो, आपकी एक्सपर्टीज़ हो एंड आपकी इनकम एक्सपोनेंशियली ज़्यादा हो. सो वाई यू शुड फोकस ऑन अ नीश? यू शुड फोकस ऑन नीश सो दैट यू आर एबल टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. सबसे बड़ी बात होती है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, you don't want yourself to be competing with the thousands and thousands of agencies जो कि इंडिया में हैं, all over the world. I think there should be millions of agencies that you might have to work with if you want to start providing your digital marketing services, your designing services, or your programming services. So you don't want to be competing with the world. आपके competition को cut down करने के लिए you should focus on one niche. When you focus on a niche, you're able to come up with more relevant offer. आप ज़्यादा अच्छे ऑफर्स ला सकते हो. फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करता हूँ, माई ऑफर इज़ ऑटोमेटिकली मोर कंपेलिंग, बिकॉज मेरा ऑफ़र जो होता है वो फैशन टेलर्स के लिए फोकस्ड होता है. तो इफ़ आई एम कंपीटिंग विद एजेंसी, जब उनसे बात करते हैं तो दे जस्ट से वी प्रोवाइड web designing services, or we provide digital marketing services. We can provide digital marketing services, and when I give my offer, I say that we provide fashion focused digital marketing services to help you grow your business, whatever my offer is. So it's more focused क्योंकि मैं उनकी language को use करता हूँ जो मेरा target niche है fashion की. So आपके offers ज़्यादा relevant होते हैं जब आप एक niche में काम करते हो. You're able, you become a specialist, which is opposite of being a generalist. आप एक specialist बनते हो और आपकी growth ज़्यादा होती है और generalist वाली struggles आपको नहीं करनी पड़ेंगी. You are a specialist, so you can strive to be best in the world at it. अगर आप बात करते हो in all these years of me working in the fashion e-commerce niche, मेरी specialization इतनी अच्छी हो गई है कि when I talk to my clients, they know that they're talking to the best. मैं जब उनको कोई भी सर्विस देता हूँ, I can thumb the table and say कि what we are offering you is really good. तो उसमें confidence होता है that speaks and we are really good in what we do. And अगर ये मैं कोशिश करता, अगर मैं niche select नहीं करता अपनी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि मैं बहुत सारी सर्विसेज में, बहुत सारे सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें प्रोवाइड करके स्पेशलाइजेशन हासिल कर पाऊँ. It takes a lot of time. So it's easier for you to be good when you are focusing on one particular niche, and you can charge a premium for expertise. Of course, जब आप एक specialist होते हो तो आपके पास clients आएंगे, they'll pay you more for your expertise. When you're a specialist, companies come to work with you instead of you chasing them. जैसे कि मेरे केस में आला फैशन रिटेल में I get business inquiries. There are clients who are almost lined up who want to schedule a call with me to see how they can work with me. I never have to chase my clients. I don't have to waste my time following up with clients because people want to work with me because of my expertise. If you go online and search for fashion e-commerce agencies or fashion focused consultants जिनको digital marketing की and e-commerce development की knowledge हो, they're handful, and इंडिया में तो there's hardly any. तो मेरे पास automatic advantage होता है अपने clients पे because I have a compelling portfolio as well now. So the clients come to me and I don't have to chase anyone. And because of my expertise, because I have portfolio that is very geared towards the fashion audience, and I have the credentials, I have to work less because my clients pay me more for the less work I did. So that's a tremendous advantage to have. To give you a context कि niches कैसी होती हैं, let's talk about this. So instead of serving to all the businesses, you get far exponential growth if you gear your consulting services to specific niche. आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलती है जब आप अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज को स्पेसिफिक निशेस की तरफ करते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ
niches look like. और ये जो जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरी खुद की रिसर्च लिस्ट है, एंड आई नो दे आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल. सो अगर इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ ऑफ कि आप कौन से niche के साथ काम कर सकते हो, here's the initial list that you can consider. Fashion e-commerce, of course, is what I started with. Lawyers, doctors, within the doctors, there are heart surgeons, plastic surgeons, dentists, software marketers, restaurant owners, hotels, travel consultants, hospitals, nutritionists, gymnasiums, real estate agents, dentists, I've already said, interior designers, personal trainers. Visa consultants is another extremely profitable niche. अगर आप visa consultants साथ काम करते हो, there's a lot of money to be made in that industry. They spend a lot of money on marketing. So and उनको ROI इतनी नहीं मिलती because they don't know digital marketing. So that's another niche that you can consider. Kids clothing is also a great niche. Recently I was bidding to a client. मैं उनकी kids clothing brand है उनकी सिंगापुर में, and I lost the client because even though मेरा जो specialization of fashion e-commerce में है, fashion apparel में है, but the client ended up hiring an agency that specialize in kids clothing. तो उनकी एक्सपर्टीज मुझसे ज़्यादा थी, वो सिर्फ kids clothing consultants का काम करते थे. And there are tons of consultants all over the world जो कि बच्चों के कपड़े बेचते हैं ऑनलाइन. And I lost the client because there was another agency जो कि मुझसे भी ज़्यादा laser targeted थी. And that's another niche that you can tap into. So how do you know which niche is right for you? अगर आप सोचो कि कौन सी niche आपके लिए अच्छी है, आपने कौन सी niche select करनी है. So here are a few hints, few ways you can figure out. Just think which niche you can relate with most. आप कौन सी niche है? Is someone in your family a lawyer and you have a liking for lawyers? आपको जो lawyers वाली जो movies होती हैं आप उनको अच्छी लगती हैं, आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, आपकी फैमिली में योर डैड, योर cousin, anybody who's a lawyer, you think they're doing really well, and because they're in their family, you understand that industry, their profession a lot, you can target the lawyer, the legal advice niche. Similarly, कोई आपकी फैमिली में dentist है and you have a lot of liking and you have a lot of initial knowledge about that industry, you can work with them. Similarly, आपके घर पे कोई रेस्टोरेंट ओनर है या फिर आपको फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी फैसिनेट करते हैं, आपको लगता है यू वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री, तो एक नेचुरल लाइकिंग एक डेफिनेट एडवांटेज होता है. यू माइट हैव यू वर्कड इन द नीश इन द पास्ट? अगर आपने इफ़ यू आर फिटनेस एंथुजियास्ट या फिर आप अगर आप फिटनेस एंथुजियास्ट हो, आप जिम जाते हो तो एंड यू हैव मेट फ्यू gym owners and nutritionists, तो आप you can work with them, you can work with nutritionists and gym and spa owners to help them grow their business by helping them acquire more customers with digital marketing. इन businesses में बहुत पैसा है because people spend a lot on their health. तो अगर आप इनमें से किसी niche को करते हो, given that you have fitness enthusiast, आपका natural interest है, तो आप वो भी कर सकते हो. Like I said, अगर आपकी पास जॉब है किसी niche में, आपने किसी ट्रैवल एजेंसी में काम किया है एंड यू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस लॉट, और आपने किसी आईटी कंपनी में काम किया एंड उसमें आप और यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग योर ऑन SaaS कंपनी, आपने कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड किया था एंड आपको मार्केटिंग में काफ़ी स्ट्रगल हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट यू लर्न अ लॉट. सो इवन दो आपका SaaS बिजनेस जो था वो इतना चला नहीं, आपको सॉफ्टवेयर इतना चला नहीं, बट यू लर्न अ लॉट अबाउट द चैलेंजेस बीइंग इन दैट इंडस्ट्री. सो मे बी यू कैन लर्न मार्केटिंग एंड help others who are in the industry and help them not repeat the mistakes that you did. So basically आपके पास उस business का context है, आप उस niche को select कर सकते हो. The point is that you should have enough interest in the niche to read a book, watch a movie on it, और कोई अपने lengthy article पढ़ते हो तो it should really आपका अगर interest है तो आप उस niche को करते हो, because that's a very important business decision that you have to make. क्योंकि अगर आपने किसी निश को कमिट कर दिया, आपके जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स हैं, यू आर मैरिड टू दैट निश, आप अब निश को चेंज नहीं कर सकते बहुत जल्दी. तो जस्ट मेक श्योर यू मेक अ राइट डिसीजन.
एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन आपके लिए होगी दैट मेक श्योर दैट यू वर्क यू नो दैट आपने जो क्लाइंट के साथ काम करना है, आपने लोकल क्लाइंट के साथ काम करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है, एटलीस्ट स्टार्ट विद. Many of the students that I work with prefer working with local clients to start with and gradually move on to working with international clients. At the same time, कुछ students होते हैं जो कि उनको लगता है कि उनको local business में इतना उनको knowledge नहीं है, तो वो सीधे international US businesses start करते हैं. तो whatever works for you, लेकिन it does impact your niche selection because example देता हूँ, plumbing niche हो गई या फिर प्लम्बर्स के साथ आप इंडिया में काम करते हो तो प्लम्बर्स इंडिया में उतना पैसा नहीं कमाते, बट प्लम्बिंग कंपनीज इन द US, ऑस्ट्रेलिया, दे मेक लॉट ऑफ मनी बिकॉज इन चीज़ों में बहुत पैसा है वहाँ पे. तो आपका नीड सिलेक्शन इंडिया में अगर आप करते हो टू वर्क विद प्लम्बर्स विल बी अ रॉन्ग सिलेक्शन, बट इफ़ यू वर्क विद प्लम्बिंग कंपनीज इन द US हु मेक लॉट ऑफ मनी एंड हु स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग, देन आपका नीड सिलेक्शन ठीक होगा. तो जस्ट नो दैट आपने स्टार्ट कौन से आपका लोकल क्लाइंट्स होंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आई लव फैशन रिटेल. आई डू हैव फ्यू क्लाइंट्स इन इंडिया, लेकिन आई स्टार्टेड विद द US एज माई मार्केट, बट ग्रेजुअली मेरे पास इंडिया से अब काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं. आई हैंड पिक फ्यू क्लाइंट्स इन इंडिया, बट मेरा जो मेन कोर ऑडियंस है दैट इज़ इन द US. तो जस्ट नो दैट आपने कौन से, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आप इनिशली कंफर्टेबल नहीं हो क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स से डील करने में, तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, इनके साथ आपको कम्युनिकेशन इशूज़ कम आएंगे, टाइम जोन डिफरेंसेस कम होंगे, या फिर आपको इंग्लिश या एक्सेंट किसी का कैच करने में दिक्कत आती है. यू डोंट फील कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट वांट टू डील अ डिसीजन कि आप जब तक अपनी इंग्लिश को अप टू द मार्क करोगे एंड बट यू स्टिल वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो आप इंडिया में स्टार्ट करो. इंडिया में बहुत प्रॉफिटेबल निशेस हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं मार्केटिंग पे एंड दे डोंट नो हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग. उनको नहीं पता अपनी वेबसाइट उन्होंने किस तरह से बनानी है, किस तरह से अपनी ब्रांडिंग करनी है. सो एंड दे हैव द मनी, सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू डिले द डिसीजन. स्टार्ट विद द लोकल मार्केट एंड ग्रेजुअली आप इंटरनेशनल मार्केट पे मूव कर सकते हो. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ our first lesson. Let's see. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दैट इज़ आई वॉन्ट यू टू सेलेक्ट योर नीश. तो बेस्ड ऑन वॉट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आई वॉन्ट यू टू लिस्ट 10 इंडस्ट्रीज दैट यू नो बेस्ट अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव नीशेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ केयर आपको कोई इंडस्ट्री की नॉलेज है तो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स में डेंटिस्ट होते हैं या प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं. फैशन में ऑफ कोर्स फैशन ई-कॉमर्स इज नीश एंड फैशन मार्केट प्लेसेस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. जो जिन फैशन रिटेलर्स का फॉर एग्जांपल खुद की इन्वेंट्री नहीं होती, दे हैव डिज़ाइनर्स हु स्टार्ट देयर ओन स्टोर, डिफरेंट बिजनेस होता है. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश. रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप जानते हो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है जिसमें मॉल्स वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, बट देयर इज अनदर सेगमेंट दैट इज़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. उसमें भी ब्रांडेड रियल एस्टेट, फॉर एग्जांपल अंसल एंड ATS, ये जो ब्रांडेड प्रॉपर्टीज सेल करते हैं, जो एज कंपनीज, या तो आप डायरेक्टली इन कंपनीज को पेश कर सकते हो अपनी मार्केटिंग सर्विसेज को, या फिर जो इनके रीसेलर्स होते हैं आप इनको हेल्प कर सकते हो लीड जनरेशन में. सो दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश. अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक SaaS सॉफ्टवेयर सर्विस जो सेगमेंट हो गया, उनको आप हेल्प कर सकते हो मार्केटिंग में. दैट्स फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द नीश दैट यू कैन गो विद. So you have to send me a list of 10 industries that you really like. इनमें से on the second step you have to select which one industry niche you would like to make your career in. आपने अपना business कौन सी एक niche के लिए करना है, तो आपने मेरे inputs को use करके you have to, जो अभी मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको ideas दिए हैं कैसे आप niche select कर सकते हो, you have to use that information to select your one niche जिसके अराउंड हम आपके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे. So you have to finish this exercise, send it to me. I'll review them and I'll give you my feedback via email. अगर हमारे one-on-one session पे हम बात करते हैं तो you can discuss your niche selection with me. I suggest you do that because ये अगर गलत हो जाती है तो your entire business थोड़ा jeopardize हो जाएगा. I don't want you to
do the hard work in the wrong direction, working for a wrong niche. जिनके पास फॉर एग्जांपल आप ऐसी कोई निश सेलेक्ट कर लो जिनके पास जो निश काफ़ी अच्छी है, जिनकी डिमांड्स आप समझते हो, जिनकी प्रॉब्लम्स आप समझते हो, लेकिन वो निश जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द निश दैट यू सेलेक्ट हैज़ मनी इन देयर पॉकेट टू स्पेंड on hiring expert. That's a very important thing.